Okay, now paper 4 theory extended 0610 variant to February March 2018 and yearly past paper 1 hour 15 minutes given time. Okay, question number 1 is related to the classification of the living organisms and about the nomenclature as well as classification chapter. It is a chapter which is included in IGCSE course 0610. It is not a part of the 5090, that is O-levels course of CNEs. But the video is for both the student of IGCSE as well as GCSE, that is 0610 and 5090. So this question is also going to solve it. ठीक है. अच्छा भाई, अब इसके अंदर पहला क्वेश्चन जो है वो ये वाला है. इन figure 1.1 is a branching key and to identify the different species of the bacteria. Okay, तो इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है. So do the bacteria flagella? One option is yes, other option is no, and according to the yes option, different options are, some options are given, and we have to select and with the option no. There are options given with the reference of option no. So we have to select one diagram or one figure from the question. ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर नीचे इतनी सारी ये 6 स्पीशीज जो है बैक्टीरिया की डिफरेंट दी हुई है और हमें इनको आइडेंटिफाई करना है और इनके नाम जो है वो बताने हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन नोमेनक्लेचर. ठीक है. अच्छा भाई, अब हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम पहली स्ट्रेन जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं. दिस वन, दीज आर द राउंड क्लस्टर्ड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया. दीज आर, पहले मैं ये वाली स्ट्रेन जो है इसको फाइंड आउट करूंगी कि ये जो है ये कौन सी जैसे कहा जाए कैटेगरी में फॉल कर रही है. ठीक है, तो उसके लिए मुझे लाजमन जिसे कहा जाए कि ऑब्जर्वेशन जो लेनी होगी वो मेरे डॉक्यूमेंट चार्ट है उसके जरिए. ठीक है. अब डू द बैक्टीरिया फ्लैजिला? नो, इनके पास फ्लैजिला नहीं है क्योंकि ये बेसिकली किस तरह के हैं जो पिक्चर में कैसे नजर आ रहे हैं. पिक्चर में ये कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं, बंच है पूरा और ये गुच्छे की फॉर्म में एक दूसरे के साथ. ओके, नो. डू द बैक्टीरिया हैव स्पाइरल शेप? नो. ठीक है, हम फिर ये यस और नो में से नो सिलेक्ट करेंगे. डू द बैक्टीरिया फॉर्म्स अ चेन? नहीं, ये तो बंचेस के अंदर है जो पिक्चर है. सो द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज एफ. सो फर्स्ट वाला जो है उसका नाम है एफ. ओके, अब अगर मैं इसको यहाँ पे जाके एफ लिख दूं तो ओके, ये वाली जो स्ट्रेन है इसका जो नेम है वो है एफ. ओके, अच्छा जनाब, अभी फॉर टेम्पररी टाइम भी मैं इसको मिटा दे रही हूँ, बाद में लिखेंगे. The next one is the second strain. अब देखो सेकंड स्ट्रेन इन्होंने कैसे बनाई है. सेकंड स्ट्रेन बेसिकली है लॉन्ग एलोंगेटेड है और साथ में फ्लैजिला भी है. ओके, तो ये इसको देखते हैं, यहाँ बना देते हैं. इसका शेप की है मोर और लेस. अच्छा, अब इसके फीचर्स भी देखते हैं और देखते हैं कि ये कौन सी स्ट्रेन है. ओके, डू द बैक्टीरिया फ्लैजिला? यस, इनके पास फ्लैजिला मौजूद है. ओके, अच्छा, फिर उसके बाद वो ये बोलते हैं कि डू द बैक्टीरिया हैव मोर देन वन फ्लैजिला? नो, दे ओनली हैव गॉट वन फ्लैजिला. देन नो, देन द स्ट्रेन नेम इज ए. इसका नाम क्या है? स्ट्रेन ए. अच्छा, अब उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं. टोटल 6 प्रीवियस स्पीशीज. दिस वन, these are the chain cocci, long chain cocci. So do the bacteria have flagella? No. ठीक है, ये जो थर्ड फॉर्म है ये कैसी है? ये चेन फॉर्म. ठीक है, तो पहला सवाल है डू द फ्लैजिला? नो. डू द बैक्टीरिया हैव अ स्पाइरल शेप? नो. डू द बैक्टीरिया फॉर्म्स अ चेन? यस. अब इसका स्ट्रेन का नाम क्या आ रहा है? यस में ई आ रहा है, तो ये वाली स्ट्रेन कैसी है? ये ई स्ट्रेन है, इसका नाम है ई स्ट्रेन. राइट. अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ वन.
फोर्थ वन ये वाली है, दैट मीन्स के लॉन्ग और फ्लैजिलेटेड। ठीक है, ये वाली स्ट्रेन जो है ये कुछ ऐसे बनी हुई है और इनके साथ एच के ऊपर एंड पे बहुत सारे फ्लैजिला जो है वो एक्सटेंड हो। ओके, do the bacteria have flagella? Yes. Do the bacteria have more than one flagellum? Yes. Do the bacteria have flagella attached at one and only? Yes. It's C. इस स्ट्रेन का नाम है C. ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास स्ट्रेन वो स्पाइरल शेप की है। ठीक है, स्पिरुला। ओके, अब जरा देखते हैं इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, डू द बैक्टीरिया हैव फ्लैजिला? नो। ठीक है, डू द बैक्टीरिया हैव अ स्पाइरल शेप? यस, इट्स बी। स्ट्रेन का नाम क्या आया? इस स्ट्रेन का बैक्टीरिया की बी नाम आया। अब फिफ्थ के बाद लास्ट वन सिक्स। अब सिक्स को देखते हैं। सिक्स स्ट्रेन जो है वो जो है कैसी है? सिक्स वन इज लाइक and flagella are polar. That means on both sides, bipolar. अच्छा, अब जरा देखते हैं ऊपर जाकर। Do the bacteria have flagella? Yes. Do the bacteria have more than one flagella? Yes. Do the bacteria have flagella attached at one and only? No. It's D. तो ये जो स्ट्रेन है इसका नाम क्या है? स्ट्रेन D. अच्छा, okay now state the name of the kingdom that the bacteria belongs to. Prokaryotes. Prokaryotes state one similarity between the structure of the bacteria and the structure of virus. Both contain DNA. Both contain proteins. Figure 1.3 is a photomicrograph of Vibrio cholera, the bacteria that causes the cholera. Okay. So the question related to this topic is write a formula that could use to calculate the actual length of the bacterium, not including the flagellum, that is size of the diagram divided by actual size of the picture and multiply by magnification. Okay. Now next one is the actual length of the bacterium is shown in figure 1.3 is 0.0026 millimeter. Convert the value into micrometer. We divided by 1000 and it will become 2.6 if I'm not wrong. 2.6. Okay. Now the next question is describe and explain the effect of cholera bacteria on the gut. Bacteria produce toxin, that is exotoxin. Exotoxin produce करता है and that exotoxin is called कोलेराजिन. ठीक है, कोलेराजिन. ठीक है, ये टॉक्सिन होता है that destroys
that damages the villi of small intestine. This will reduces the absorption of digested food in blood. This will lead to heavy water and electrolyte loss from the body, by passing watery stools or rice water like. Okay, so just one treatment for cholera. Treatment for cholera is administering ORS plus antibiotics. ठीक है. Okay, another question is related to the COPD, and it says that a study estimated that the number of the people with chronic obstructive pulmonary disorder (COPD) is in India. Data were collected from two groups of the people: those who lived in the cities and those who lived in the villages. As far as graph is shown, city bars are of black color and village bars are of gray color. And it is clearly observed that the rate of the COPD, chronic obstructive pulmonary disorder, is very low in the city as compared to the villages. Okay, compare the number of the people with COPD in the cities and cities with the number of the people with COPDs in the village, and suggest the reason for the differences. Okay, the above bar graph shows very clear difference in COPD values. COPD stands for chronic obstructive pulmonary disorder. इसमें क्या होता है कि ट्रैकिया जो होता है ट्रैकिया gets shrink, ठीक है, और इसके अलावा alveoli damages, that is emphysema can also be happen. That is gross damage of lungs, including alveoli damage and blood capillaries rupture. Okay, so the difference, clear difference in COPD value in cities and villages. Cities has very low COPD ratio, whereas villages have high rate
This is because of lack of awareness and passive passive smoking, that is tobacco, weed, or other different modes. Okay. Explain how the body prevents particle in inspired air from reaching the gas exchange surface. Okay, as we know, the dust particles plus allergens can enters in the respiratory tract by breathing, but nostril, hair, trachea, trachea, mucus glands, that is blood cells, and secretion of mucus prevents respiratory system damage. Okay, now explain how the body prevents particles in inspired air from reaching the gas exchange surface. As I had already explained you that here nostrils and trachea, tracheal cilia, um, mucosal gland in goblet cells. All of them prevents the particles, trap the particle from the inspired air and do not let them pass inside the lower respiratory tract system where the purification of the blood takes place. State two ways in which the composition of inspired air it differs from the composition of expired air. Inspired air have inspired air have low concentration of CO2 and high concentration of oxygen. Whereas expired air and inspired air is also dry, plus inspired air, dry air. Expired air have high concentration of carbon dioxide, low concentration of oxygen, and moist. Right? Now, another question is, alveoli are well ventilated to provide efficient gas exchange. State the name of the muscle that causes the ribs
to move during the ventilation. Diaphragm plus intercostal muscle. Okay. During inspiration, the pressure and the volume in the thorax changes. State these changes: pressure increase, volume increase. Pressure decrease, volume increase. Pressure decrease, volume increase. Okay, now this question is related to the reproduction in mammals. Figure 4.1 is a diagram of the human female reproductive system. A is the oviduct. Oviduct, and F is the ovary. D is the uterus sac. E is the endometrium. D is the cervix, and C is the vagina. We shall release estrogen. Letter F, ovary. Site of fertilization, oviduct A. Okay. Site of implantation, it's E. Endometrium. And next, which one is dilated is the cervix, that is D. Okay, now chlamydia. Chlamydia is a sexually transmitted disease or infection. Figure 4.2 shows the number of reported cases of chlamydia in a female in each age group in one country. अब फीमेल के अंदर जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें एक तो प्रोमिशियस सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर हो सकते हैं, और समहाउ अनहाइजीनिक कंडीशंस भी काफी हद तक जो है उसमें रोल प्ले करती है. नंबर ऑफ क्लैमिडिया केसेस इन 2008 10 to 14 एज के जो फीमेल्स हैं उनमें बहुत कम है, 15 to 19 में हाईएस्ट है, 20 to 24 एज ग्रुप की जो फीमेल्स हैं उसमें भी ऑलमोस्ट सेकंड हाईएस्ट है, थर्ड हाईएस्ट 25 to 29. as soon as the age is increased the number of cases decreases. That means के मेरी पॉसिबल अवेयरनेस है या ट्रीटमेंट जो है या फिर इम्यूनिटी जो है वो अच्छी डेवलप हो गई, इस वजह से अगर इन केस उनको इन्फेक्शन हुआ भी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का, तो वो जो है कवर अप हो गया है ना. तो डिस्क्राइब द रिजल्ट शोन इन बाय द डाटा इन फिगर 4.2. अच्छा, इसमें विदाउट रीजनिंग इसको एक्सप्लेन करना है, सिर्फ जो ग्राफ में लिखते नजर आ रहा है वही बताना है. तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, according to graph, highest cases of STD reported in the females of age range 15 to 19 years. Second highest 20 to 24 years, and as the age group increases
number of reported cases decreases. Wow. Chlamydia is caused by the bacterium. Suggest the treatment for the chlamydia: antibiotics, both topical and oral or IV. Okay. अच्छा, state the name of one other HIV. HIV or syphilis. अच्छा, please whether complete the sentence about the spread of sexually transmitted diseases. Sexually transmitted diseases are transmitted through the transfer of pathogen during sexual contact. One way individuals can avoid the spread of sexually transmitted disease infections is to use the type of mechanical or chemical contraception. One example of this type of contraception is spermicides for male, condoms for male, female. Okay. Define the term chemical digestion. Digestion in which complex material changes into simple food material by the action of enzymes. That is biological factors. Student investigate the activity of the digestive enzyme pepsin. Figure 6.1 shows the apparatus used in the investigation. As a test tube 1, egg white solution and pepsin. Test tube 2, egg white solution, pepsin and hydrochloric acid. This one is reactive one. ठीक है. Test tube 3, egg white solution, boiled pepsin, no, inactivate हो जाएगा एंजाइम जो है. एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होने के बावजूद भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकेगा. कंप्लीट रिजल्ट से बस इसमें आएगा. फिर टेस्ट ट्यूब 4, एग वाइट सॉल्यूशन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड पॉपुलेशन हो जाएगी बट पार्शियल रिजल्ट आएगा. इस बार स्टॉप क्लॉक. ठीक है, ये हमने देखने के टाइम में इसमें पहला वाला जो है कि एग वाइट सॉल्यूशन एंड पेप्सिन, इसमें भी नहीं होगा क्योंकि एसिडिक मीडियम में जो है पेप्सिन होता है वो काम कर रहा है. अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास the presence of the four test tubes was reported at 0 to 5 minutes. The protein in the egg white solution gives the solution a cloudy appearance. The cloudy appearance clears when the protein in the egg white solution breaks down. Table 6.1 shows the result. अच्छा, egg white solution pepsin appearance at 0 minute cloudy और less cloudy 5 minutes बाद. ठीक है, थोड़ा बहुत एक्टिव हुआ. अच्छा, तो उसके बाद एग व्हाइट सॉल्यूशन, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लाउडी और 5 मिनट में क्लियर. ओके, 5 मिनट बहुत ज्यादा टाइम है. उसके बाद एग व्हाइट सॉल्यूशन, बॉइल्ड पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लाउडी और इसमें भी क्लाउडी रहेगा बिकॉज नो पेप्सिन इज देयर. egg white solution plus hydrochloric acid, cloudy and cloudy. अच्छा, इसमें सिर्फ पॉपुलेशन आएगी. वैसे वो होगा क्या कहते हैं मीडियम जो होगा वो टर्पिड या जिसे कहते हैं ज्यादातर क्लाउडी ही महसूस होगा, फील होगा.
अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द रिजल्ट शोन इन द टेस्ट 1, 2 and 3 in table 6.1. 1, 2 and 3. ओके, यहाँ इधर ही देखिए, यहाँ साइड में लिख देते हैं ताकि टेबल के सामने रहे. टेस्ट 1, टेस्ट 1, egg white is a little bit digested by pepsin, but complete action not takes place. Action was not taking place because of lack of acidic medium. As far as next इन्होंने क्या बोला, test tube 2. Test tube 2. Okay, test tube 2 में है clear solution because all the protein in egg white digested completely because all the components, because all the required components are up to the mark. अच्छा, फिर उसके बाद है टेस्ट ट्यूब 3. अच्छा, टेस्ट ट्यूब 3 में हमने बॉइल्ड पेप्सिन डाला है. टेस्ट ट्यूब 3, no reaction. Reaction because enzyme deactivates because of boiling. Okay. Okay, today we are going to start with the past paper, yearly past paper, paper 4 theory extended. 0970 of 41 May June 2018, 1 hour 50 minutes. Done. Okay, पहला question है the reaction of chemical digestion are catalyzed by the enzyme. Enzymes are the biological catalysts, as we know. Figure 1.1 shows the stages of the enzyme catalyzation. A is the substrate. Okay, and B is the active site. C is the enzyme substrate complex. Enzyme substrate complex, and D is the product. Okay, so this is required in the next question also. ये मैंने सारा रिपीट कर दिया है. ये जो है, जो आगे चीज क्वेश्चन पूछा है उसमें वो यही चीज मांग रहे हैं. तो these are the answers. Now, another question is about the digestion. Explain the importance of chemical digestion. Chemical digestion is the process necessary to convert large insoluble compounds to small
soluble one by the action of digestive enzymes. These digestive substances absorbed by cells, body tissues to perform perform the process of now another question is figure 1.2 shows the human alimentary canal and associated organ. The function of some of these parts of the body are given in figure 1.1. A is the buccal cavity. M is the epiglottis. B is the esophagus. C, stomach. D, pancreas. E, small intestine और ये small intestine में कौन सा वाला part है? Duodenum. It's jejunum. And duodenum is the J part. Duodenum is the J part, whereas K is the liver, L is the gallbladder, where bile is stored. H is the ascending colon. F is the rectum.